In the midst of the outbreak of the second wave of the coronavirus pandemic, India has achieved a major breakthrough. The first anti-COVID drug developed by the Defence Research and Development Organisation DRDO was launched on the 17th of May at the DRDO headquarters in New Delhi. India's Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan launched the first batch of the indigenous drug 2-deoxy-D-glucose or 2-DG. The drug has been developed by DRDO's Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, INMAS, in collaboration with Hyderabad-based Dr. Reddy's Laboratories. After a successful Phase 3 trial, the Drugs Controller General of India has approved the emergency use of 2-DG. This medicine, prepared in the form of sachets, is administered after being dissolved in water. It can greatly reduce the virus load in patients. ये आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा कोई चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर जो क्षमता है, वो ताकत है, उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। The 2-deoxy-D-glucose or 2-DG drug is actually an altered form of glucose molecule and is used in the treatment of tumors and cancer cells. During the first wave of the novel coronavirus, DRDO INMAS scientists started researching the drug and found it effective against the COVID-19 infection. When a virus gains entry into our body, it uses the machinery and energy of our cells to replicate. Drug 2-DG will interrupt this process. Like glucose, cells will readily accept 2-DG molecule, but unlike glucose, 2-DG will inhibit the process of energy release. This will prevent the virus from growing and will also reduce oxygen consumption in the cells. By stopping the growth of the virus, the drug will help the patient to recover faster, and at the same time the patient will also be less dependent on external oxygen. According to scientists, the selective accumulation of drug in infected cells makes the drug special, as all variants of the virus use the same mechanism to grow and replicate, so the drug should be effective against all the variants. उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिज़ल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिज़ल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। At present, 2-DG is being used as an adjunct COVID therapy. 2 doses of 2-DG can be given daily for 5 to 7 days. After examining the data of the medicine, the drug can be added to National COVID-19 Treatment Protocol. In the second wave of coronavirus, the need for oxygen has increased many-fold, and now there are indications of a third wave too. In such a situation, this indigenous drug developed by the Defence Research and Development Organisation can help in the safe recovery of COVID patients as well as relieve some of the pressure on our health services. The production of this drug is being done by the associate company Dr. Reddy's Laboratories.